हेलो ऑल, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एमक्यू इनपुट नोड क्या होता है और एमक्यू इनपुट नोड का सारा हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे कि ये पास इनपुट पार्सिंग में क्या होता है, पार्सिंग ऑप्शंस क्या होता है, उसका से एडवांस में हमने देखा था ट्रांजैक्शन मोड क्या होता है। एवरीथिंग हम लोग डिटेल में देखे थे इनपुट इनपुट नोड के बारे में। इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि एमक्यू आउटपुट नोड के प्रॉपर्टीज क्या है और एवरीथिंग हम लोग डिटेल में देखेंगे एमक्यू आउटपुट नोड। उससे पहले हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडलिंग और कंप्यूट नोड देख चुके हैं, तो हमारे पास बचा है एमक्यू आउटपुट नोड। चलिए शुरू करते हैं। एमक्यू आउटपुट नोड अगर हम जाते हैं तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पर आप किस नोड का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एमक्यू आउटपुट लिखा हुआ है तो यहाँ पर एमक्यू आउटपुट, यहाँ पर अगर चेंज करिएगा तो ये इट विल चेंज टू हियर। उसके बाद से जो है यहाँ पर ये बेसिक इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे है कि किस लिए यूज होता है। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे हैं कि दिस इज द आउटपुट नोड फॉर द क्यू मैक्स वन। क्यू मैक्स वन मेरे पास क्यू मैनेजर है, उसके लिए कोई एक हमने आउटपुट नोड क्रिएट किया है जो कि क्यू एम आउटपुट नोड क्रिएट किया है, इसलिए हमने बोला है कि दिस इज द आउटपुट नोड फॉर द कीमजर क्यू मैक्स वन। ओके, और बेसिक में आते हैं तो बेसिक में एक क्यू का नाम देते हैं कि जहां पर हमको मैसेज राइट करना है। हम लोग एमक्यू इनपुट नोड में मैसेज को पुट करते हैं तो रीड करता है यहाँ से मैसेज, और यहाँ पर मैसेज का कंप्यूट नोड होकर यहाँ पर जो है एमक्यू आउटपुट नोड के इस क्यू में हम लोग मैसेज को जो बेसिक में रहता है उसमें हम लोग पुट करते हैं या राइट करते हैं। तो ये अगर देख सकते हैं कि ये जो क्यू है, जब आपके पास क्यू मैक्स क्यू मैनेजर के अंदर में जो है क्यू एम टू डॉट लोकल है, यहाँ पर हमको मैसेज राइट होगा। ये हम लोग यहाँ पर देते हैं। अब बात करते हैं एमक्यू कनेक्शन। एमक्यू कनेक्शन ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर तीन तरह का होता है, लोकल क्यू होता है, एमक्यू क्लाइंट होता है और चैनल कनेक्शन डेफिनेशन टेबल होता है। अगर लोकल क्यू मैनेजर है तो यहाँ पर आप अगर किस क्यू मैनेजर में मैसेज को पास करना चाहते हैं वहां देना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम देते हैं कि हम सपोज क्यू एम टू देते हैं, तो क्यू एम टू तो मैसेज हम जब क्यू एम एक्स वन में पुट करेंगे तो मैसेज जो है हमारा इस नोड के थ्रू होकर फ्लो होकर ये मैसेज जो है क्यू एम टू को चला जाएगा। तो ये सेम चीज फुलफिल करने के लिए हम लोग रिमोट क्यू क्रिएट करते हैं, ट्रांसमिशन क्यू क्रिएट करते हैं, सेंटर चैनल रिसीवर चैनल क्रिएट करते हैं, ताकि क्यू मैक्स वन से मैसेज जो है क्यू एम टू तब एक मेजर से दूसरे मेजर में फ्लो करे। बट सेम काम हम फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्यू मेजर क्यू एम टू देकर और यहाँ पर क्यू एम टू का क्यू का नाम, जैसे हम क्यू एम टू का क्यू का नाम हमारे क्या है, हमारे पास है। तो अगर देखते हैं कि बी डॉट लोकल, तो यहाँ पर अगर क्यू में आप बी डॉट लोकल देते हैं और यहाँ पर क्यू एम टू देते हैं तो इट विल बी मैसेज जो है ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा। ये आप इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको एक लास्ट वीडियो में आपको देख सकते हैं। हम आपको ये दिखा चुके हैं कैसे फ्लो करता है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, एमक्यू इनपुट नोट करके आपके पास एक वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ सेम सी बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस में। एडवांस में आता है डेस्टिनेशन मोड को कहता है। डेस्टिनेशन मोड यहाँ पर तीन है, क्यू नेम करके है, रिप्ले टू क्यू है और डेस्टिनेशन लिस्ट है। तीन चीज होता है, तीनों का अपना अपना प्रॉपर्टीज है, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, बात करते हैं पहले कि डेस्टिनेशन क्यू रिप्ले क्यू नेम अगर रहेगा तो क्या होगा और कैसे होगा। तो आपको ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि क्यू नेम के बारे में। तो अगर नॉर्मल क्यू नेम रहेगा तो जो मैसेज एम क्यू क्यू का नेम दिया रहेगा आपके बेसिक में, वहाँ मैसेज राइट कर देगा। ठीक है, तो हम पहले क्यू नेम वाला देखते हैं। अगर मेरे पास पहले क्यू नेम है और उसमें हम लोग मैसेज को राइट करके देखते हैं और क्या होता है। तो लेट मी सेव द बार फाइल, रन कर देखते हैं। उसके से हम लोग देखेंगे कि अगर रिप्ले टू क्यू है तो क्या हो, कैसे मैसेज फ्लो करेगा, डेस्टिनेशन होगा तो कैसे मैसेज फ्लो होगा। हमने लेट्स बिल्ड द बार फाइल, बिल्ड एंड सेव, तो से रिप्लाई कर देते हैं बार फाइल। लेट्स मी पुट द मैसेज थ्रू द आरएफ यूटिल। यहाँ पर हम लोग क्यू मैक्स में वन में क्यू में वन में मैसेज को हम पुट करेंगे। पुट द मैसेज, ऐसे देखिए मैसेज पुट कर दिए, ये आपके पास मैसेज जो है क्यू एम टू डॉट लोकल में चला गया होगा, देख सकते हैं। ये मैसेज जो है क्यू एम टू डॉट लोकल में चला गया। तो हम अगर सिंपल से अगर 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 आप रखते हैं मैसेज जो है यहाँ पर बेसिक सा जो बाय डिफॉल्ट ये रहता है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ रहता है देन आपके पास रहता है क्यू नेम। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेटिव क्यू। रिप्लेटिव क्यू में अगर आप चूज करते हैं देन यहाँ पर इस अगर एमक्यूएमडी में जो रिप्ले टू क्यू का नाम दिया रहेगा, किस क्यू को रिप्ले करना है, तो वहां पर मैसेज ना यहाँ फ्लो ना होकर जो है वो मैसेज जो है फ्लो करेगा जहां पर रिप्ले क्यू का नाम दिया रहेगा।
अगर आप देख सकते हैं एमक्यूएमडी हेडर में यहाँ पर रिप्लाई टू क्यू का नाम रहता है। यहाँ पर जो क्यू का नाम रहेगा वो जो है वहाँ पर मैसेज फ्लो करेगा। जो मैसेज आप अगर मैसेज आप क्यूएम वन डॉट लोकल में डालते हैं, फिर मैसेज जो है यहाँ पर मेनली इन जनरल अगर यहाँ पर क्यू नेम चूज़ करते हैं, देन इट विल फ्लो टू द क्यूएम टू डॉट लोकल। बट अगर यहाँ पर अगर आप रिप्लाई टू क्यू चूज़ करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में डेस्टिनेशन मोड का देन मैसेज फ्लो करेगा। यहाँ पर जो क्यू का नाम दिया रहेगा क्यू एम वन डॉट लोकल, तो यहाँ पर जो क्यू का नाम चूज किया रहेगा रिप्लाई टू क्यू में, एम क्यू एम डी हेडर में रिप्लाई टू क्यू, या आपके पास जो है यहाँ पर यहाँ पर दो तरीके से हम मैसेज को भेज सकते हैं अगर देखा जाए। तो एक तरीका है कि हम आर एफ यूटिल में रिप्लाई टू क्यू का नाम दे दे और पुट कर दे, देन इट विल बी फ्लो टू द दैट क्यू। दूसरा तरीका है कि हम कोड में कुछ चेंज कर दें और मैसेज को हम भेज दें रिप्लाई टू क्यू के पास। तो लेट्स हम देखते हैं। तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल क्यू चूज करेंगे, क्यू नेम चूज करेंगे तो मैसेज यहाँ एम क्यू आउटपुट नोड में जो क्यू दिया रहेगा उसमें फ्लो करेगा। अगर रिप्लाई टू क्यू चूज करेगा तो जो रिप्लाई टू क्यू का नाम रहेगा वहाँ मैसेज फ्लो करेगा। एम क्यू एम डी हेडर में जो रिप्लाई टू क्यू का नाम रहेगा उसको वहाँ मैसेज फ्लो करेगा। तो लेट्स हम पारा पारी पहले पहले हम नॉर्मल यहाँ आर एफ में नाम देंगे और देन उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन रिप्लेटिव क्यू मैसेज फ्लो करता है कि नहीं करता है, एंड देन आफ्टर दैट हम कोड में भी चेंज करके देखेंगे और कैसे मैसेज फ्लो करता है। तो लेट्स सी। पहले हम मैसेज को यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी हमने चेंज चेंज कर दिया रिप्लेटिव क्यू, वो सेव कर लेते हैं इसको। बस हम बार फाइल को बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड एंड सेव, देन इसका हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है? उससे पहले हम जो है पहले से मैसेज मेरे पास क्यू में है, क्यू में उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको देख सकते हैं कभी कोई मैसेज नहीं है, एक मैसेज था उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। Wait, वैसे मेरा क्लियर हो चुका है, अभी कोई मैसेज नहीं है बस। तो लेट मी राइट ए मैसेज। के लिए मैसेज हमने क्या किया, हमने एक मैसेज को क्यू एम डॉट वन लोकल में सब इनपुट नोड के जो क्यू है उसमें हमने मैसेज को ओपन किया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एम क्यू एम डी में जाकर यहाँ पर रिप्लाई टू क्यू का नाम देंगे। रिप्लाई टू क्यू का नाम हम कौन सा चूज करते हैं, तो हम इसमें लेट्स सेलेक्ट द आर रिप्लाई टू क्यू, आर ई पी डॉट क्यू। अतः हम इस क्यू क्यू हमारे पास एक क्यू है इसका नाम है आर ई पी डॉट क्यू, उसमें मैसेज को हम पुट करना चाहते हैं। तो हमने क्यू का नाम चूज कर दिया एम क्यू एम डी हेडर के अंदर में। उसके बाद हम इसको क्या राइट करते हैं, जैसे हमने राइट किया तो इट शुड गो टू, लेट्स सी वेयर इट्स गॉन। इट इज गोइंग टू समहाउ एरर क्यू। So let's see what error is going on. We check the error. So let me launch the debugger. Once debugger has been launched, let me again write the message. Let me again write the message. The message has been opened. Let me choose the repetitive queue name. Then again write the message. I have written the message. Message has come to here. Let me go inside the code. Here sitting output. So there is a issue. I have mentioned forget to mention the return true, because if you are not write return true, the message will be throw error. Message will not go out to output true. So let me clear the job and let me change the code. We see. Let me go out. Let me terminate the debugger. Let me change the code. Let me mention the return true. Now I have changed the code. Let me build and save. Let me deploy. Let me again write the message. For that, let me launch the debugger so that we can see what's going on.
Currently, there is two messages in error queue. Let me again write and see what is going on. I have chosen the queue. Me the replay.queue already was chosen. Let me add the message. Message came to here. Let me go inside the code. File has been set. Turn to done. Then it's go outside of this. Again, it's come to error. Let me go inside that. What exception is coming? Replay to queue name not displayed. Somehow the replay to queue name it has not set properly in the RFHUT. So let me try again. Let me terminate the debugger. Somehow there is a issue in replay to queue. Let me choose the queue qm.11 label. Give the name. Give the queue manager name. Given. Let me open the file. Hence, it has disappeared. Let me write it again. This will problem you will not face when I write in the code. I will show you that one also. Don't need to worry. Let me write the message. I just sent the message to all queue. I somehow debugger was not launched. So let me see the message where they gone. Again, it is going to error queue. We see why it is going. If you see the error what we are getting, the error. Something you may reply to maybe not a specified. Let me per the queue. You see, already I told you, the reply to queue name is only set in case of whatever the queue in with the MQMD, whatever the reply queue name, it will send the message. But the issue is that when I am writing in code, I am just setting set output route XML NSC and that the instead of whatever the incoming input would set. So we are setting only the XML NSC part, that is the payload part. We know that there is message for a message there is three parts, that is the properties, MQMD, and something like that. That the payload part. We are setting just payload part, take it fetching the details from the payload part and setting to the output route. But that's not correct. जैसे कि आपको let me again lens the debugger and show you. Be good to understand you. Let me punch and show you. Let me again write the message. If I write the message, my debugger will launch. Or it not going to be. Let me write to correct queue. That is not the I have put into the error queue. Let me write to the correct queue. I just written a message. If you see again here, you see. Let me go inside the queue code. If you see, this is the actual our message that is the input route. The mention here is the input root.xml. This this is the input root. The message part is the input root, and the input root there is a three part, that is the properties, MQMD, and the XML. Basically, what I was doing, I was fetching the XML part only from the input root. But if you see that in MQMD, the reply to queue name was given mainly. The reply to QMGR and reply to queue name. Basically, this section is present in the MQMD. So that's the night. If you see in the input rate, I am fetching the XML NSC part only, and you are expecting that you will get the this value. That's not the right way. Na? So you need to do change in the code. So let me write it change in the code. So let me terminate the debugger. Let me change.
For this, I just remove the XML part and just I will hit whatever coming in the input root. Set the all whatever the coming in the input, other properties, MQMD, and the XML part, and send to the output root. And let's me save and again deploy and let's see what is going on. Let me deploy it and let me again set the reply to queue name. Again, let me the open the file one. Again, if you see MQMD, there is nothing mentioned. Let me write the queue name and at the QMG name. Let me again write the message. For that, let me launch the debugger so that you can see what is going on. Write it. I just written message has came. Let me go inside the code. Now let's see. After running this line, this is the message part basically, and this is fetching for our input root. If you see in the XML, that is the XML part, and if you see in the MQMD, that is the our reply to queue name and the reply to QMGR name. And that's the thing I have given here in the MQMD part. तो ये जो है इस कारण से जो है MQMD से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिप्ले क्यू नेम ले लिया और रिप्ले टू QMGR ले लिया, और जो है ये सेम चीज अगर देख सकते हैं आप कि आपका आउटपुट रूट में सेट कर रहा है। आउटपुट रूट में अगर इफ यू गो टू एन आउटपुट रूट, सेम प्रॉपर्टीज MQMD में रिप्ले टू क्यू नेम, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन द इनपुट रूट, इट इज सेटिंग इनटू आउटपुट रूट। और हमारे पास जैसे ही ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी जो है डिफाइन करके रखा है यहाँ पर, अगर देख सकते हैं तो कि रिप्ले टू क्यू, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करके रखा है एडवांस में रिप्ले टू क्यू, तो जो भी रिप्ले टू क्यू मैसेज रहेगा उसको मैसेज वहां पर पुट कर देगा। तो लेट मी अगेन गो टू डिबग मोड एंड सी। So let me again write the message. It's gone outside the queue and see. If you go here, see, its message came to reply to queue. You can see. The thing, what you have learned here, the whatever the message present in the whatever the reply queue name present in the MQMD header, it, that in that if you choose the reply to queue, whatever the queue name present in the MQMD header, reply queue name, that message will go to here. There is the one way to send the message. Mention the reply to queue name here and then send it. But I don't want to mention here the reply queue name here, and just I'm sending normal message without mentioning the here. Then how it is possible? There is another way to write the code. So let me write the code. First what I will do. First I will fetch from the input root. I will fetch the detail of the reply queue and set into output root. So let me set it. Set output root. We are setting in output root. We are basically setting in output root under the MQMD header. What basically I'm doing, basically what you already know that, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी क्यू रहेगा आपके पास MQMD हेडर में, कि आउटपुट अगर आउटपुट रूट क्रिएट होता है, आउटपुट रूट में अगर जो भी आपके पास रिप्ले क्यू में जो क्यू का नाम रहेगा MQMD हेडर में, वहां पर वो जो है मैसेज जो है फ्लो कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम कोड में ऐसा लिख देना चाहते हैं, कोड में हम डिफाइन करना चाहते हैं कि आउटपुट रूट हमारा जो भी क्रिएट हो उसमें हम रिप्ले टू क्यू नेम सेट कर दें। व्हाट माय पॉइंट, हम चाह रहे हैं कि आउटपुट रूट मेरा जो क्रिएट हो, आउटपुट रूट के अंदर में जो MQMD हो उसमें सिर्फ हम रिप्ले टू क्यू नेम सेट कर देते हैं, और जो भी मैसेज आएगा देन पास कर देंगे। तो लेट मी राइट MQMD एंड उसका से रिप्ले टू क्यू, देन रिप्ले टू क्यू, सॉरी रिप्ले टू क्यू, और यहाँ पर हम क्यू का नाम दे देंगे
रेप डॉट क्यू, हमने क्यू का नाम दे दिया। हमने क्या किया, हमने एक आउटपुट रूट क्रिएट किया, आउटपुट रूट के अंदर में एमक्यूएमडी गया, एमक्यूएमडी के अंदर में रिप्ले टू क्यू गया और वहाँ पर जिस क्यू को हमको रिप्ले करना है वहाँ पर उसका वैल्यू सेट कर दिए। उसका सब जो भी मैसेज मेरे पास इनपुट रूट में आएगा उसको आउटपुट में से यहाँ पर चाहे तो हम एक्सएमएल एनएससी भेज सकते हैं, सिर्फ चाहे तो हम एक्सएमएल एनएससी वाला पार्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देयर विल बी नो इशू। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास हम पूरा मैसेज ना भेजकर हम सिर्फ चाहें तो हम सिर्फ एक्सएमएल वाला पार्ट भेजें, तो हम यहाँ से भेज सकते हैं। क्योंकि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है जो भी आउटपुट इनपुट रूट हमने आउटपुट रूट में जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट हम आउटपुट रूट में ही जो मेरे पास क्रिएट हो रहा है उसमें एमक्यूएमडी में जाकर रिप्ले टू क्यू में जाकर यहाँ पर क्यू का नाम सेट कर दे रहे हैं और जो भी ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दिया रिप्ले टू क्यू, तो जो भी मैसेज आएगा इस क्यू में ही जो आउटपुट रूट में जो सेट रहेगा रिप्ले टू क्यू नेम उसमें वहाँ पर जो है मैसेज जो है वो चला जाएगा। यहाँ से पता चलेगा कि मैसेज कहाँ जाना है और फिर फाइनली हम लोग जो है जो भी इनपुट रूट के अंदर में जो एक्सएमएल में वैल्यू प्रेजेंट है उसको हम आउटपुट रूट में सेट कर रहे हैं और उसका रिटर्न टू कर दे मतलब कि मैसेज आपको प्रोपेगेट आउट टर्मिनेट कर दे रहे हैं। So let me save and redeploy it. Let me deploy it. Let me launch the debugger. Streamline the message. अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है qm1 डॉट लोकल में एरर डॉट qm क्लियर करें, मैसेज नहीं रहते, सारा क्लियर हो चुका है, कोई क्यू मैसेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ से कोई क्यू मैसेज नहीं है। नाउ लेट मी राइट द मैसेज इन qm1 डॉट qm1 डॉट मैसेज लोकल में मैसेज में हम एक यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक चूज कर लिया, रूट डॉट सेम मैसेज चूज कर लिए हैं। एमक्यूएमडी हेडर में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किए हैं, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। ओके, लेट मी राइट द मैसेज। मैसेज राइट कर दे चुके हैं, मैसेज आ चुका। गो इनसाइड द कोड, लेट मी गो इनसाइड। अब देख सकते हैं, अगर आप देखते हैं तो अभी लेट मी गो इन है, देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इनपुट रूट में अगर जाते हैं आप तो यहाँ पर ये तो मेरा एक्सएमएल जैसी पार्ट है जो कि पेलोड पार्ट है। अगर आप एमक्यूएमडी में जाते हैं तो एमक्यूएमडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट रूट में कुछ भी रिप्ले टू क्यू में यहाँ पर मेंशन नहीं है। किस क्यू में रिप्ले करना है कोई मेंशन चीज़ नहीं, हमने मेंशन किया ही नहीं है। बट आप देख सकते हैं, अगर देखें आउटपुट क्यू में, आउटपुट रूट में, तो हमने आउटपुट रूट में हमने किस क्यू में रिप्ले करना है यहाँ पर मेंशन किया है। आउटपुट रूट में हमने क्या किया है, हमने एमक्यूएमडी के अंदर में जाकर उस तरह से हमने रिप्ले टू क्यू कहाँ रिप्ले करना है ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया है जाकर रिप्लेटिव क्यू करना है इन आउटपुट में, जो ये आउटपुट रूट में एमक्यू आउटपुट में, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्टिनेशन मोड में रिप्लेटिव क्यू चूज किए हैं और हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर दिया है कि रिप्लेटिव क्यू। फिर अब उसका से नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर देखें तो हमने क्या किया, उसके बाद से जो भी जो है एक्सएमएल एनएससी पार्ट था यहाँ पर हमने पूरा एमक्यूएमडी प्रॉपर्टीज ना कॉपी कर सिर्फ हमने एक्सएमएल वाला पार्ट कॉपी किया और ये हम चाहते हैं सिर्फ बाहर जाए, तो हमने उसका से और अब हम उसका से रिटर्न टू करके मैसेज को हम आउट टर्मिनल प्रोपेगेट कर दिए एंड इट लेकिन राइट मैसेज कर दिए। अब मैसेज देख सकते हैं कहाँ पर मैसेज आया है, तो अगर ब्राउज कर दें तो यू कैन सी मैसेज केम टू रिप्ले डॉट क्यू, सेम मैसेज इफ यू सी हियर 1 मिनट, सेम मैसेज यू कैन सी। ठीक, तो हमने एक दो तरीके से देखा, हमने एक क्या तरीका किया, क्या हमने जो है एक आरएफएक्यू में रिप्ले टू क्यू चेंज कर दिए, वो तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमने कोड्स में चेंज कर सकते हैं, कोड में हमने चेंज कर दिया बेसिकली, हमने कोड में हमने क्या किया, आउटपुट रूट क्रिएट किया, आउटपुट रूट के अंदर में जो एमक्यूएमडी के अंदर जाकर हमने रिप्ले टू क्यू में जाकर क्यू के नेम सेट कर दिया और उसके थ्रू से हमने जो है दिखा दिया कि कैसे जो है हमारा कैसे रिप्ले टू क्यू में जाएगा। तो हमने एक चीज़ देख लिया। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी बढ़ते हैं विराट टाइम लॉस किए हुए। नेक्स्ट बात करते हैं डेस्टिनेशन मोड। डेस्टिनेशन मोड में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि मैसेज मेरे पास जो आ रहा है ये इनपुट मोड में, वहाँ से जो राइट कर रहे हैं वो हमारे पास एक अभी तो जा रहा है सिर्फ जो मेरे पास एक क्यू के पास जा रहा है, हम बहुत सारे क्यू के पास मैसेज भेजना चाहते हैं। तो वो एक तरीका है भेजने का, कि हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे क्यू के पास मैसेज मेरे पास जाए, तो हम वो चाहेंगे तो वो हम भी कोड में डिफाइन करके लिख सकते हैं, तो बिना कोई इशू के। तो लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द हियर
हमने रिप्लेटिव क्यू देख लिया, हमने क्यू नेम देख लिया, बेसिक जो क्यू नेम हमको प्रोवाइड है वो कर देंगे। हमने तो ये रिप्लेटिव क्यू देख लिया कि इफ यू select the property, the message will be written to reply to queue field in the MQM header. It will write the message to the queue we provided in MQM header. You can change from the RPH util and either you can mention like that here. Okay. Then next come to destination mode. Destination mode में क्या है? If you select this property, the message will be written to the list of the queues. आप जितना भी चाहे, अगर आप चाहे 50 क्यू तो 50 क्यू में मैसेज राइट कर सकते हैं। सेम मैसेज अगर बहुत सारे क्यू में राइट करना है आपके पास, तो डेस्टिनेशन मोड चूज करके डेस्टिनेशन लिस्ट चूज करके और जितना सारा कोड में आपको डिफाइन करना है कि क्या डेस्टिनेशन लिस्ट है, उसका से उसके हिसाब से आप चाहे तो आप डायरेक्ट में राइट राइट कर सकते हैं। टू सेंड दिस लोकल इन्वायरमेंट कंप्यूटर में जाकर आपको ये चूज करना होगा। लेट यू सी, लेट्स 1 मिनट। देन अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड में कुछ चेंज करना होगा। तो क्योंकि हमको चाहते हैं बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारा डेस्टिनेशन के पास मैसेज हम सेंड करें, तो आप आपको जो चेंज करना होगा। तो फॉर द डेस्टिनेशन लिस्ट आपका जो जो लोकल इन्वायरमेंट में क्यू का नाम दिए रहेंगे, वो जो है आउटपुट लोकल इन्वायरमेंट में वो जो है वहाँ पर जो है उस मैसेज राइट करेगा। उसके लिए आपको कोड में चेंज करना होगा कि आउटपुट लोकल इन्वायरमेंट में आपको क्यू का नाम डिफाइन करना होगा। अगर क्यू का नाम हम डिफाइन करते हैं, देन इट विल बी मैसेज विल बी इजीली फ्लो। तो यहाँ इसको हम पहले लेट्स कमेंट इट एंड लेट मी डिफाइन द। तो हम बिना टाइम बर्बाद किए हम जस्ट इसको डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं। फिर हम ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, तो आपको इसको हम समझा देते हैं। तो लेट मी राइट डायरेक्ट कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट। तो एलिमिनेट इट। क्लियर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आउटपुट लोकल इन्वायरमेंट में सेट कर रहे हैं। उसके अंदर में डेस्टिनेशन के अंदर जाकर, एमक्यू के अंदर में जाकर, डेस्टिनेशन डाटा के अंदर में, क्यू के अंदर में जाकर इसको हम क्यू के नेम सेट कर रहे हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि हमको अगर कोई भी अगर डेस्टिनेशन लिस्ट आप अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एमक्यू आउटपुट नोड में, तो डेस्टिनेशन लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, देन आपको अगर लिस्ट ऑफ बहुत सारे क्यू के पास मैसेज सेंड करना चाहते हैं, देन आपको जो है लोकल इन्वायरमेंट, आउटपुट लोकल इन्वायरमेंट में जो जो क्यू का नाम डिफाइंड होगा, देन वहाँ पर जो है वो मैसेज वहाँ पर फ्लो करेगा। तो हमने आउटपुट लोकल इन्वायरमेंट में क्या किया, हमने जो है एक डेस्टिनेशन के अंदर जाकर, एम के अंदर में जाकर और क्यू के अंदर जाकर एक क्यू के नाम को डिफाइन किया। यहाँ पर 1 क्यू चूज किया क्योंकि यहाँ पर हम एरे के रूप में यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट हम लोग मैसेज भेजना चाहते हैं दिस क्यू में, देन सेकंड मैसेज भेजना चाहते हैं दिस क्यू में। ओके। उसका से हमने क्या किया, जो जो आउटपुट रूप में था उसको इनपुट में भेज दिया, उसको रिटर्न ट्रू कर दिया, लाइक सिंपल। लेट मी राइट द कोड एंड अगेन आई हैव रिटन द कोड, लेट मी बिल्ड एंड सेव। अगेन लेट मी डिप्लॉय इट। हम मैसेज पुट करेंगे, तो उससे पहले हम कोई मैसेज है तो उसे पर्च कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैसेज गया। लेट मी क्लियर द क्यू। क्यू क्लियर हो चुका है। लेट मी राइट द मैसेज। तो मैसेज राइट करते हैं। ओपन द क्यू, ओपन द फाइल। ओके, राइट मैसेज राइट कर दिए हैं, बट इट विल बी गुड इफ यू लंच द डिबगर। लेट्स सी मैसेज कम हियर नो। Now message is going to the error queue. Let's see what is the error coming. Invalid destination list. Something like the destination list is not correct. Let me clear the queue. Let me write it again. To just 1 minute. Whatever thing like that. I'm sitting here. You see here the message coming like that, invalid destination list. It means we are giving the something code here. You see, I am just setting the output local environment, the name of the queue,
and this is the first name and the second queue name. But thing is that you have not defined in the basically in the compute node, you have set in the compute mode type message, and you setting the value of the local environment tree. Here you need to choose and drop down the local environment and the message. Basically, we are you are because basically we were setting the value of in the low output local environment tree, and also you are fetching the from the input and setting the value of the to the output. Basically, two works you are doing. Basically, you are fetching the value from the input and setting to output, and you are setting the value to the output local environment tree. That's the reason you need to select the local environment tree and message. And let me now build and save and see what's going. I just build and save the bar file. Let me launch the debugger. Before that, let me deploy it. Because I need to deploy it. Let me deploy it. Let me again relaunch the debugger. So let's see any message there or not. Any one message error queue. Let me delete it. There is no message in any of the queue. See here. Let me write the message in the qm.1 local. Let me open the queue. Let me write the message. Debugger has been launched. Let me go inside the code. We go here. If you see in the output node, we are just setting the value of the XML part, and in the destination mode, we are just setting the two queues name that we in the output local environment tree. And earlier it was giving error because we are setting the queue in the output local environment tree, but in the compute node we have not defined it as a our local environment tree. That's the reason it was giving the error. Let me see what it is being on. Let's go out again in the code. Now it's go outside the out terminal. Move forward. Now the message has been put into the queue. Let's see where it's came. See, it is coming to the qm2.local and the rep.q, and that I have mentioned in the message flow, that is qm2.rep.q. If you see here, then again from the rfh util rep.q, the same message was present, and see here in the qm2.local, same message was present. So that's the how the destination code works. That's the way. Here we have seen that how it is working in the destination mode. Once that the destination mode in the advance, however, we see how it's working the queue, how we are replying the message into reply to queue, and how we are sending to many queue. If you want to send 10 queues, you can just write here that similarly 10 lines and different queue name. It will write the message to different queue. So that's another interesting way to send to many queue messages. Now we are going to learn in the last, as we have also learned in the transaction mode in the input node. Here we are also going to learn in the transaction mode in the output node also. So let me, you already learned that one, that part. That's the destination list. Let's come to transaction mode. The transaction mode is also yes, no, and automatic. So let me, before that, let me bring back to everything to normal. uh, this is already normal. Yeah, it's normal. Let me bring back the compute node to normal. Let me bring back to this to a queue, and let me bring back the compute node to the also the back to the normal. Set the message and let me comment out this code also, but we are not going to use this. Now let's come to destination transaction mode. Transaction mode is automatic. Yes, no. If you are choosing yes, you will write to a if you're choosing thus, if the transaction mode of the MQ output is yes, then what of a person we are doing will committed only if the transaction is completed.
In case any exception, the my transaction will rolled out back and the operation will not be committed. Everything will be in original state. Message will be seen only when transaction complete. Let's you want to send a message to the two different queues, and the same message. If you choose in the transaction mode is yes, then message will be first write to the that queue. Then again it will go to the that queue. And but once the message has been passed from this queue, you will not see the message here. आप मैसेज तभी देख पाइएगा जब टोटली जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, टोटली जब पहले इसमें भी राइट हो जाएगा, then इसमें कंप्लीट हो जाएगा, then you will see the message. Let's see. Let me for that again I need to create a one more empty output tool. Let me again write the one more आउटपुट की और जरूरत पड़ेगा, इसके लिए एक आउटपुट और क्रिएट कर दिए. लेट मी कनेक्ट टू द टर्मिनल आउट वन connected. So what we are doing basically, we are sending message the input queue and we are sending first message to the MQ node 1 this, and again we are sending message to the MQ output 2. Let me select from the here there, so the name of the queue. Let me select the rep.queue here, and I just want to send a message first to the m2.local and then again I am to the rep.queue, and see what is the behavior when we select the transaction mode yes and transaction mode no. So let me first select the transaction mode yes, and again for this also transaction mode yes, and let's see. Let me add the breakpoint. Okay, but here also we need to change some code. Let me remove this one. Basically what we are doing, we will do nothing. What we are doing, first we are sending message to the this out terminal. After that, once the message has written to here, I will write the message to the this out one terminal, and again after that we will do nothing. The same thing I have to write here. I will just write first. It will set the message to the whatever the input route, send the message to the output route, that is the payload part. Again after that it will to propagate to terminal 0. Why it is written 0? It is written 0 because it is terminal to the out terminal, and out terminal is 0 and the out terminal is 1. So, and it is instead of writing the propagating to the out terminal 0, you can write also a return true like that. Return true, and this thing goes same. If you write return true or propagate to terminal 0, both are same. Let me write the again. If again we are moving to the, after writing the terminal 0, again we are moving to the propagate to terminal 1. Propagate. Let me write the spelling correct. Terminal 1. What after that? What we are doing? We are just writing the message to here. After that, we are writing message here, and we are doing nothing. So write return false, because we want to terminate after that. We don't want to do anything. Let me now my code part has been completed. Let me build and save, and after that it deploy it. Deploy it. After that, once let me put the message, and for that let me launch the debugger and let me launch the debugger and see what's going on. Let me open the qm.local. For that, let me see if any message in any queue. No message in any other queue. Let me open the file. Let me choose the message. I have chosen the same message. Again, let me write the message. My message has come to debugger. Then let me go to inside the code. First, see here. First, whatever the input node, it is the output. Okay, here. Then I am going to run to propagate to terminal 0. It is moving to the out to the this terminal. Then let me move here. Yeah, message has came to here. It again go to the terminal 1. You see message
फर्स्ट नाउ इट्स केम टू द प्रोपेगेट टू टर्मिनल 1, द मैसेज हमारे पास इस एमक्यू इनपुट नोड पर राइट हो जाना चाहिए, बट विल नॉट राइट। यू सी इन द QMT डॉट लोकल, सी देयर इज नो मैसेज, you see here there is no message. Somehow it has been written. Let me check and let me forward. Enter false. Now message me written to both queue. Let's see where the issue is going on. And on transaction mode, basically there are three types: yes, no, or automatic. If the transaction mode, if you see the yes, if you select the transaction mode as a yes, this here, uh, basically here, then what will happen? When you send the first message, message will come to here, and it will not write a message here. Again it will go to the here, and again it write a message here and as well as here. But in case some error happen, let's take an example. If message came to here, it will not write here. Again, if some error happen, it will goes to here and will throw an error and will go back to the again MQ input node, and it will not write to MQ input node and MQ output node. तो ये इसमें जो होता है नहीं, इसमें राउट करेगा नहीं इसमें, बट इफ यू सिलेक्ट द नो, what will happen? Message will come to first select here, and message will go to first MQ input node, and again message will go to the MQ output node, and for once the message come to MQ input node, it will go to here, again it will go to here. The only difference is that in MQ, if you select yes, message will be come to both queue once the transaction is completed. If you select the no, message will be come to first, message will come to first MQ output node, even if the transaction is not completed. First will come to here, then here. In case of yes, it will go to the both queue at a one time. That's the difference. Let me show you one of the if the transaction mode is no. Let me show you, and let me build and save the bar file. Random message. Launch debugger. For every node dot relaunch. I've written the message. If you see, came to here. It's came to terminal one. Message came to here. Written to the see the came to local. Yeah, message has come to here. I will just written the message and one message. Again to move forward. Again go to here and we'll write to the other queue. See the came to local dot queue. You can see. See, some blank message came somehow. Let me check why this happened. We can write the message. Here I have selected yes, that's maybe region. Let me again save the, we didn't save the bar file. Let me redeploy it. Yes. Again, we launch debugger. The debugger has been launched. We write the message in the in written. Debugger has been came here, gone to here. S has been written here. The message first came to the qmt.local. Can we go out here? Message has into the another. You see, they made into repeated.
if I select the ref.q, that the you see here that came to dot local. See, message has came here, and if you select somehow it's maybe some issue. I will check that message should come here. It will come here. So that you need to know the concept. What the basically concept is that if select the transaction mode is yes, then first message will come to here. But first transaction first come here, but the message will not come here. In again, it will go to here and it will write the message here as well as here. But you select the no, the first message will return to here, and again it will go to the here. जैसे ही अगर यस चूज करते हैं तो मैसेज पहले यहाँ पर आएगा और बट यहाँ राइट नहीं करेगा, बट ये पॉइंट फिर यहाँ पर आएगा, फिर अगेन राइट करेगा। वंस द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड देन मैसेज विल रिटर्न टू, बट इफ यू सिलेक्ट द नो, मैसेज विल रिटर्न टू क्यू बिफोर कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल इस क्यू में मैसेज रीड करेगा, राइट करेगा, अगेन इट विल राइट टू हियर। नाउ लेट्स कम टू व्हाट अबाउट द ऑटोमेटिक। सिलेक्ट द ऑटोमेटिक, to select automatic, what will be done here? You select automatic. If the in input note it is written, it is mentioned as yes, it behave as yes. If in input note is come as no, then it behave as no. So whatever the property in the MQ input node, it will behave like that in MQ output node. You will inherit the property from the MQ input node. So that's the we have learned about the description basics and the MQ connections, advanced destination mode, and the transaction mode in this lecture. Huh? Again, if you have any doubt, you can comment me and right. And this is basically we need to do the concept. We will use how it's work in very easy way, so don't need to worry. Uh, you see here it is already written node 1 node 2 में एक साथ मैसेज दिखेगा for the flow, but first is seen here in node 1 and node 2. Select automatic inherit transaction. Basically, you need to know the concept. Concept is very important. If you know the concept, you can solve everything. Again, we will in next lecture we will learn about the. We are going to learn about the again the validation part for the MQ input node and the validation part for the part for the MQ output node. If you see the MQ output input node, there is if you select the MQ output, there is a validation, and we will learn how we can validate a email and how can we in detail. So don't need to worry. So let's move to the. We will move slowly to the next topic. And we will learn every detail. We go so in everything topic. If you have any doubt, you can comment me. If you have any topic or confusion on a topic, I will also that. So you don't need to worry about that. If you like the video, you can press like button, or you have not subscribed till now to my YouTube channel. It will be very helpful for me. Thank you. Thank you for watching the video.